रामनगर में गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन डे। गौसिया तालीमी इदारे ने मुल्क और मिल्लत को सोसाइटी को दिए मजीद 350 इंजीनियर्स। विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर एस विद्याशंकर, आईआईटी दिल्ली के एक्स डायरेक्टर प्रोफेसर डीपी कोठारी ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की। उभरते हुए इंजीनियरों को दिया अहम तरीन पैगाम। गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की खिदमात की सताइश। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। दिस इज द कॉलेज वेयर यू गेट बोथ जमी एज वेल एज आसमान। Really, it's a pleasure for me to visit the Gausia College of Engineering. I know that this college was established 40 years back and it is doing well. This is not the first time that I am visiting the college. As a teacher of the private institution, I had visited this institution long back once or twice. This is my most probably third or fourth visit. Definitely, this institute is doing good things and everything. They are doing well, and students also faring well with respect to the result. And I am happy that I am attending the graduation ceremony today of this university. And I want this college to become a university. This is the college which I have seen visiting throughout the world. I never seen such a dynamic people, hardworking, very intelligent, and today is the graduation day, which is a convocation. It's a very important day when the students will get converted into alumni. आज बतारीख 23 मई 2024 बरोज जुमेरात गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रामनगर के स्पोर्ट्स ग्राउंड में ग्रेजुएशन डे सेलिब्रेशन का शानदार इनाकाद अमल में आया। इदारे के चेयरमैन अहमद शरीफ सिराज, सेक्रेटरी उमर इस्माइल खान, प्रिंसिपल डॉक्टर जाहिर हसन और दीगर जलवा अफरोज थे। इस मौके पर 8 इंजीनियरों को पीएचडी की सर्टिफिकेट से सरफराज किया गया, जबकि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के 300 से जायद तलबा व तालिबात को डिग्री की सर्टिफिकेट अता की गई। उमर इस्माइल खान ने कहा कि 1980 में कायम गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अब तक 20,000 से जायद इंजीनियर्स फारिग हुए हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मकामात में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बेलगावी से आए विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर एस विद्याशंकर ने यूनिवर्सिटी के जरिए शुरू किए गए ऑनलाइन ऑफलाइन नए कोर्सों की जानकारी दी और कहा कि काबिल और सलाहियत याफ्ता नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। आईआईटी दिल्ली के साबिक डायरेक्टर डीपी कोठारी ने भी स्टूडेंट्स को कई कीमती मशवरे दिए। दूसरी जानिब गौसिया कॉलेज से फारिग होने वाले तमाम तलबा व तालिबात ने अपने तालीमी सफ़र पर खुशी व इत्मीनान का इजहार किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। Definitely, this institute is doing good things and everything. They are doing well, and students also faring well with respect to the result. And I am happy that I am attending the graduation ceremony today for 23-24 batch of students. Somewhere there is a negative thinking in students in spite of doing engineering and about their futures or opportunities related to. So how do you see this? No, see, engineering is one of the professional education. Today every field needs an engineer. No work can be done without an engineer. Whether you take agri-tech or you take manufacturing or you take information science, anything without engineer, no field can exist. So definitely there are a lot of opportunities for youngsters. The youngsters must think of
becoming an entrepreneurs or the startup, they should think of providing, becoming a job provider than the job seeker. There are a lot of opportunities for them, and they can do better and better. There are a lot of opportunities. Only thing they have to do is they have to work hard to achieve the goals. They must fix the goals, and when they fix the goals, they must work hard, and there are so many obstacles will come in the way of reaching the goals. The students must have the capacity, they must build a capacity in such a way that they must overcome those obstacles which may come in their way of achieving the goals or the target. So there is no dearth of opportunities. There is no dearth of opportunity. One thing I will tell you, in India, the population being 140 crores, India is the youngest country. In what way it is youngest? Out of every 5 population of the world, 1 is an young Indian. So there are a lot of opportunities, not only in India, across the world. In future days, the Indian students will have lot of opportunities to work in the different industry or different organization across the world. थैंक यू सर। थैंक पर हुई है ग्रेजुएशन डे मनाया गया है, और इस मौके पर क्या मैसेज है? आज गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज में 23-24 बैच का ग्रेजुएशन डे हुआ है। तकरीबन 350 बच्चे ग्रेजुएट बने हैं इंजीनियरिंग में। उसमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, ये सब बच्चे हुए हैं। उसके अलावा एमटेक भी बच्चे बहुत से फिनिश किए हैं और पीएचडी भी कंप्लीट किए हैं। तो आज ग्रेजुएशन हुआ है, बी, एमटेक एंड पीएचडी, इतने कोर्सेज हुए हैं। बहुत अच्छा लगा। और आज के चीफ गेस्ट हमारे वाइस चांसलर वीटीयू के आए हैं, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। और आईआईटी न्यू दिल्ली के एक्स डायरेक्टर कोठारी साहब, वो भी आए हैं। तो आज इंजीनियरिंग लाइन के 2 बहुत बड़े पर्सनालिटीज आज हमारे फंक्शन में चीफ गेस्ट बन के आए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो कैसे इंजीनियरिंग के शोबे में कैसे आपकी कॉलेज आगे बढ़ रही है, क्योंकि पुरानी कॉलेज है और एक मुकाम रखती है? जी, ये कॉलेज 1980 में एस्टैब्लिश हुआ है। तकरीबन 20,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आगे निकल गए हैं। तो ये हमारा, और जो है थोड़े बीच में कोविड की वजह से थोड़ा स्लम्प हो गया था इंजीनियरिंग में। अब फिर एक डिमांड पिकअप हुआ है। एक नए प्रिंसिपल आए हैं अल्लाह के फजल से, जाहिर हसन साहब, तो वो भी जो है आईआईटी में काम करके आए हैं। तो उनका माहौल एक अच्छा माहौल बना रहे हैं और एक इदारे को अच्छी तरक्की दे रहे हैं। और ये हमारा काम है, एडमिशन्स अच्छे कराना, कोचिंग अच्छी हो और मैक्सिमम प्लेसमेंट्स हो। ये 3 चीज़ पे हम वर्क कर रहे हैं। अल्लाह का फजल से इस साल हमने बहुत कामयाबी मिले हैं। जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सब बताया है कि अक्सर लोग प्लेस हुए हैं और वो हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत खुश हैं। आने वाले दिनों में क्या मंसूबे हैं यहाँ पर? इस साल फिर से नए कोर्स शुरू करें। पिछले साल कुछ नए कोर्सेज ऐड किए थे, जैसा साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोर्सेज। तो इस साल भी और थोड़ा मजीद कोर्सेज ऐड करेंगे। बीबीए भी शुरू करने का प्रोग्राम है। तो पूरी तवज्जो दी जा रही है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सों और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर हिस्सा लें। जी बिल्कुल, एक अच्छी टीम बनी है। जैसे हमारे दूसरे इदारों में, अलमीन के इंस्टीट्यूशंस में प्रिंसिपल, स्टाफ, एक अच्छी टीम बनी है, अच्छा काम हो रहा है। गौसिया में भी इसी तरह से एक नया प्रिंसिपल आए हैं, एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, बहुत काबिल हैं, उनकी अच्छी टीम बनाए हैं, यंगस्टर्स की टीम है और बहुत मेहनत हो रही है। इंशाल्लाह अच्छे नताइज मिलेंगे इसमें से। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಸ್ವಂತ್ ಗೌಡ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಗೌಸಿಯಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮಗೆ PhD ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಬಹಳ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, PhD ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಡನ್ ಮೈ PhD under Dr. G.S. Munawar Pasha. He is an environmental engineer and professor, and also he is a director of R&D from Gosea College of Engineering, and he has guided me excellently. Under his guidance, I could able to achieve this PhD degree. With a background of very humble origin, a kind-hearted personality, who has developed the culture of the. It's very good actually to obtain a higher degree, not only in this for the sake of PhD. It enhances your skills and innovative thinking and analytical capability.
It will help to assess, to analyze the things in various perspective in any of the field. It will help. Thank you. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ಮಾಡಿ PhD ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಶ್ ವೆರಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ NS ಕುಮಾರ್ ಸರೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಎಲ್ಲಾನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೀಗ ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್. It was very good, 7 years. My father was here, I studied here, BE, MTech, PhD. I think it's a wonderful experience because I have been associated with this college for more than a decade. So it is nothing short of wonderful. Thank you. I am currently looking for jobs, but I am also hoping to pursue research in the same field that I have done my PhD. My name is सैदा हुमैरा मुस्कान और मेरा इस कॉलेज में सफर बहुत अच्छा गया अभी तक के, और मुझे बहुत खुशी है। आज मेरा ग्रेजुएशन डे है और आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छी एजुकेशन मिली यहाँ पे। Good afternoon, myself Tahmina. Here I am from the Hosea College of Engineering. Here the studies are good and lecturers are so good and teaching is so good. Anybody wants to join in this college, you can. Thank you. लेडीज के लिए कैसा है यहाँ पे एटमॉस्फेयर वगैरह? It is good for ladies, women's, ladies also. It is good nature here. Here is the good nature and everything is good here. And here is having the namaz room to pray and everything is there. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಒಂಥರ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಇದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಇಷ್ಟ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತದೇನಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಗೌಸಿಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಭಯ ಅಂತದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಂತ ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ಟೀಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Of course, I'm a Gaussian College engineering student. It was a very good journey. I've enjoyed it a lot, and I would like to thank our principal, teachers, and parents, and of course my dear friends. Thank you all. So how is the teaching and facilities here? Teaching is good, and facilities are also fine. So you are happy with your results? Yeah, I'm happy with my results. You got placement also? Yes, I'm placed in Genesis Groups. It's in Whitefield. Thank you. अच्छा था, बहुत अच्छा था. हाँ. तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? यहाँ पे आपकी पढ़ाई हुई? बहुत अच्छा था, मेमोरेबल था. हाँ. कहाँ से आप आए? हम यहाँ से ही हो, रामनगर. हाँ. तो क्या कह रहे हैं, यहाँ की टीचिंग हो? यहाँ टीचिंग बहुत जबरदस्त है, स्टाफ भी बहुत जबरदस्त है. हाँ. तो अभी आपका प्लेसमेंट भी हुआ है? जी, अभी प्लेसमेंट चल रहे हैं. हाँ. हो जाएगा प्लेसमेंट. तो आपको आपके रिजल्ट्स वगैरह अच्छे रहे? हाँ जी, अच्छा है. जी बोलो. हो जा रहे हैं. अब तक का सफर बहुत अच्छा था. यहाँ तक 3 साल के डिप्लोमा के बाद माशाल्लाह बहुत अच्छा सफर था. मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया था. मैकेनिकल का स्टाफ तो बहुत अच्छा माशाल्लाह, लेकिन लेता कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है उनको जरा कॉपरेट करना है. बजट का सब बहुत अच्छा है. कोई तकलीफ यहाँ पे? नहीं है, ऑलमोस्ट कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छे से हुआ. रिजल्ट्स वगैरह आपके कैसे रहे? सब बहुत अच्छे से.
इल्म कहता है जिसे सबसे बड़ी दौलत है ये, ढूंढ लो इसको अगर दुनिया में इज्जत चाहिए. But before we part our ways, let's start this new beginning with a heart full of gratitude. Starting with our institute, I thank all the board members of Gausia College of Engineering for providing a safe and secured environment for our growth. Please put a big round of applause. Since I belong to Tripoli, I really want to say like a lot of things for the staff of Tripoli department, but since there is a limited time and words, I would only say that we, the Tripoli department students, are really blessed to have teachers that are really helpful and very kind towards us. We really thank you so much for being always there with us. And this thank is not only on my behalf. I thank you all on behalf of our Tripoli department and especially the final years. Thank you so much. For each and everyone, their support and guidance to the institution are much valuable. Thank you very much, sir. It is appreciated that our beloved principal, Dr. Zahir Hassan, sir, who is working hard for the betterment of the college and the students' life. Thank you very much, sir. I would like to thank our administrative officer, Ada sir, who handles all the situation in a very smooth manner and supported me in every aspect and especially motivated me to complete the NPTEL course to get the honors. Thank you, sir. Nextly, here comes about the placements. As everyone knows very well about placement officer Eliza, who worked hard to set up placements of students in GCE day by day and motivated us a lot. He is the future asset of the college, and I'm sure that so many students will get placed. He treated like me his own brother and taught me many life lessons. Thank you very much, sir, but you're not here. About my examination, but here the faculty members, whoever are present here, are very work hard. They do very work hard, and they have supported me, constantly supported me. I do want to mention some names here. That is my mentor, my guide, Mr. Omar sir, who has constantly supported me throughout this journey. And I want to thank each one of my lecturers, Zabiha ma'am, Salma ma'am, Samina ma'am, and Zahra ma'am, and Isaac sir as well. I want to thank my principal sir, who has brought so much of changes in Gausia College. Thank you so much, sir. I'm blessed that I was in the time when you arrived, and I want to thank the management as well, who has brought many changes in the placements as well. We were thinking of that the jobs and placements will not be in Gausia College of Engineering. The man who brought them so many changes in placements, and I was thrilled by his work, the dedication, his hard work, totally worth us. He brought so much of companies in the Gausia College of Engineering. Mr. Elahi sir, I thank him. I am grateful that he came when I am in the final year. We were thinking that each and everyone I know. So for this, first of all, I would like to thank Allah the Almighty for bringing me here. And next, I would like to thank my mom, my mom, who made me capable to stand here. Next, I would like to thank the department who encouraged me to explore the talent and potential in me. I'm really grateful to my teachers who have changed my whole aspects towards learning. I express my heartfelt thanks to the institution for giving me the perfect opportunity to explore myself here. The Gausia was like it's a memory I'm never gonna forgive in my whole life. Thank you each and everyone, and I wish at last to all the graduates to have the good and best future ahead. Thank you one and all. For the past 4 years, Gausia has given us the foundation for our future. The college's commitment to academic excellence and innovative has been instrumental in shaping us into the engineers that we are today. Also, our journey would have not been possible without unwavering support and guidance of our esteemed faculties. As I'm from Computer Science branch, I would like to thank our HOD, Dr. Dilshad ma'am, and our beloved teachers Zara ma'am, Dr. Salma ma'am, Samina ma'am, Isaac sir,
Dr. Venkatesh sir, Durrani sir, Ganeshan sir, Irfan sir, Ibrahim sir, Dr. Zabia ma'am, Rajeshwari ma'am, our lab instructors Reema ma'am, Yasmin ma'am. We all students deeply appreciate everything that our placement officer Eli sir has done for us. Thank you sir for your unwavering support and dedication. And again, how can I forget to thank our first year faculties from mathematics department. Gausia College of Engineering was commenced in the year 1980 with only 2 branches, civil and mechanical engineering, in a private building in Ramnagaram town. Later, the college is shifted to this campus. In the year 1985, another 2 branches, electrical and electronics, electronics and communication, were incepted. In the year 1986, computer science and engineering was created. In latter years, we introduced post-graduation courses as well. Right now, we have 5 post-graduation programs: structural engineering in civil, 2 specializations in mechanical engineering, that is manufacturing science and engineering and machine design, in electrical, power system engineering, and in computer science, PG in computer science. In addition to masters, we have research centers approved by Vishweshwaraya Technological University in 6 different streams. Research center in civil, mechanical, electrical, computer science, physics and chemistry. From our research centers so far, 56 candidates awarded PhD degree and 14 more scholars are still pursuing PhD programs in our research centers. In the recent convocation organized by VTU, from our college, 6 candidates awarded PhD degree. I would also like to thank my present chairman, Dr. Ahmad Sharif Sharaj, for all the help he is giving, and the trustees for their support in running this engineering college. Now we have a very good team of youngsters in this college, headed by the principal, Dr. Zahir Hassan, and his team, and who are working very hard day and night to make sure that we raise our standards here and we provide good education to our students. Students, congratulations! I'm very happy to see all of you all doing well, and those students who have spoken here have spoken very well, and I'm happy about that as well. And all those who have got the PhDs and MTech and all the graduating students, I congratulate all of you all. Also, a few points that we have seen through this event. You have three the speakers were the most excellent speakers you ever had. For a vice chancellor of the VTU, who is running about 215 engineering colleges, for that person to come here and spend time with us and give us advice is a great honor for us. Then for Mr. Kotari, who was the director of IIT, former director of IIT, and so many other positions he has had, written 80 textbooks, so many PhDs, he has had through this function. It is a great honor again for Gausia that we have 2 great chief guests today here. Apart from that, I would also like to thank all the other staff here, the support staff, etc., who worked very hard to make this function successful. A lot of planning has gone into this. Many days of hard work have gone to make this function a great success.